Hi friends, in this session we'll start with this Nernst heat theorem. This is our first theorem of your syllabus. How can they ask this question? The question can be derived from this is discuss the Nernst heat theorem and derive the equation giving relation between this free energy, enthalpy and heat capacity. और सिंपल स्ट्रेट अवे इक्वेशन पूछ सकते हैं discuss and derive Nernst heat theorem. So without wasting much time, let's start with the first question, Nernst heat theorem. In 1906, scientists named Nernst gave the theorem that when the temperature changed to this gives free energy and the enthalpy should be changed. By this theorem, individual condensed system cannot be cooled at the absolute zero temperature. So theorem start with this. Consider a system having n gram equivalent of the reactant. Means reactant basically n gram hai. Q is the amount of heat. That is Q is in 1 calorie heat. Absorbed per molecule in a reaction. C is heat capacity. Now hope you are aware about heat capacity. Minimum energy required to increase 1 degree Celsius temperature of particular system is known as heat capacity at the final state, and then change in temperature, that is delta T is increase in temperature. So consider a system जिसके अंदर n gram equivalent reactant है, Q is the amount of heat, that is 1 calorie heat absorbed per 1 mole, C is the heat capacity and final state, and then dt is change in temperature. So मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा उसका? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू इंटू एन बाई सी. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. बट फॉर द थर्मल रिएक्शन, होप यू आर अवेयर अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस मीन्स क्यू इज इक्वल टू टी डेल्टा एस. सो T delta S0, S0 stands for initial state, plus T into 0 to T delta C by T dt. So this is your equation number 2. Q is equal to T delta S, where delta S is nothing but as initial minus final, so that is S0, that is initial. So that is Q is equal to T delta S, T delta S0 plus T common integration 0 to T delta C by T dt. Now according to this quantum mechanics, आप लोगों को आई थिंक थर्ड ईयर ऑफ बीएससी के अंदर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब करवा था उसके साथ एक और पार्ट था डी बाय. सो दिस इज योर डी बाय थर्ड लॉ. सी इज इक्वल टू ए टी क्यूब. क्यूब इज नथिंग बट बी, यहाँ पे बी ले लिया हुआ है. सो सी इज इक्वल टू ए टी क्यूब वहां पे आपको पढ़ाया गया था, वही इक्वेशन है. सी इज इक्वल टू ए टी रेस टू बी वेर बी इज ग्रेटर देन 1. So change in C, that is delta C is equal to A1T B raised to B. So delta S is nothing but delta S0 plus integration 0 to T. इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए. डेल्टा C की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए उठा के. So डेल्टा C की वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए. that is A1T raised to B by T dt. So डेल्टा S becomes डेल्टा S0 प्लस इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस A2T raised to B. So what is the Q value? Q is nothing but T in bracket delta S0 plus A2 T raised to B. So जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, that is delta T is equal to Q into N by C. एक एक करके सारी की सारी वैल्यू वहां पे उठा के रखना है. Q क्या है? तो Q की वैल्यू ये है. वो इक्वेशन नंबर 1 क्या था? डेल्टा T is equal to Q into N by C. फर्स्ट स्टेप हमने C पढ़ा. C क्या था? A T raised to B. ये उठा के यहां पे रख देंगे. What is Q? Q की वैल्यू अब भी हमने डिराइव की. Q is equal to T into delta S0 plus A2 T raised to B. ये भी उठा के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखना है. So now equation number 1, that is delta T is equal to Q into N by C, चेंज होके ये बच जाएगा. So now by placing values of Q in equation number 1, dt is equal to N
ये वैल्यू है Q की, T इंटू डेल्टा एस जीरो प्लस ए टी टी रेस टू बी डिवाइडेड बाई C था, C की जगह पे हमने रख दिया है ए टी रेस टू बी. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू n डेल्टा एस जीरो प्लस ए टू टी रेस टू बी. Here in case a t raised to b minus 1. Obviously this goes to downside, that's why it's b minus 1. So this is your equation number 6. Now थोड़ा सा theoretical discussion कर लेते हैं. So from the above equation we can say that when temperature T decreases towards to 0, then this bracket, that is n into delta s plus a2 into t raised to b, are going to becomes constant. That's why that is n into delta s0 a t raised to b, that is in denominator, is going to become a 0. So Nernst का final conclusion क्या था? When temperature goes to 0, means towards to 0, at that time this value becomes almost 0. Here when t becomes 0, numerator also approaches to the 0, and so डेल्टा एस becomes 0. डेल्टा एस becomes 0 का मतलब एंट्रोपी का वैल्यू 0 हो जाएगा. If somebody remember the third law of thermodynamics, then third law of thermodynamics clearly states that at 0 Kelvin temperature, pure crystalline compound having entropy value is 0. So this is your almost proof or प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ नर्न्स्ट हिट थियरम. जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, जो नर्न्स्ट के टर्म्स में इस हिसाब से डिराइव हुआ. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द वांट ऑफ थियरम्स TYBAC में आप लोगों को पढ़ाया गया था. ln kp इज इक्वल टू ln kp 0 प्लस इंटीग्रेशन t0 टू t डेल्टा h अपॉन RT स्क्वायर इंटू dt. So this is your want of equation, and want of equation को हमने गिब्स-हेल्मोंट के साथ कंपेयर किया था. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गिब्स-हेल्मोंट इक्वेशन था डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी इंटू डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी. सो बेसिकली दिस LHS सेम, तो RHS ऑलमोस्ट सेम. So though we concluded that from above equation we can say that delta G is equal to delta H. So finally conclusion, T.W. Richard has proved that when the value of d of delta G by dt decreases and the value of delta G and delta H is also comes to nearer to each other as temperature approaches to the 0. So final conclusion, this is the graph delta G or delta H versus T. So when temperature approaches to 0, delta G and delta H values is also become almost 0. This is the conclusion of Nernst Hit theorem. From this, Nernst said that when the temperature is decreases towards to 0, d of delta G by dt is also goes towards to 0, and at T is equal to 0 Kelvin temperature, the value delta G and delta H equal to same. तो डेल्टा जी एंड डेल्टा एच दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. सो द अबाउ थियरम इज नोन एज नर्न्स्ट थियरम. एंड नर्न्स्ट थियरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा? सो दिस इज योर मैथमेटिकल स्टेटमेंट. व्हेन लिमिट t टेंड्स टू 0 means temperature towards to 0, d of delta G by dt is equal to limit t tends to 0, d of delta H upon dt is equal to 0. मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा एट टूवर्ड्स टू 0, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी. सिंस डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी एट द रेट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस एंड डी ऑफ डेल्टा एच बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा सी पी. डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी एंड डेल्टा सी पी इज चेंज इन हिट कैपेसिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर नर्न्स्ट हिट थियरम फर्स्ट थियरी. नाउ क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन में एक और पॉइंट पूछा था, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, एंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी. सो दिस इज द आंसर. नर्न्स्ट हिट थियरम इज डन. जो एप्लीकेशन पार्ट था वो यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. सो
Nernst heat theorem is applicable for only and only for solid, because no gas exists at absolute zero temperature. Absolute zero temperature पे generally gas exist नहीं करेगा, only solid is exist. So the integration of equation number 9, delta S is equal to integration 0 to t delta Cp dt by t plus I0, where I0 is integration constant. So according to this Nernst theorem clearly बता रहा है limit t tends to 0, delta d of delta g by dt and limit t tends to 0, d of delta h by t is becomes 0. So delta S0 is equal to 0, then I0 becomes 0. So equation क्या हो जाएगा, equation कट शॉर्ट हो गया हो जाएगा, delta S is equal to integration 0 to t delta Cp dt by t. So delta G is equal to delta H minus T delta S. This is second law of thermodynamics and Gibbs free energy or Gibbs free का definition. G is equal to H minus Ts. So delta G is equal to delta H minus T delta S. So delta G has it is, delta H has it is, और S की जगह पे minus T integration 0 to T delta Cp dt. So here in case you get the relationship, this is heat capacity, this is energy, and this is Gibbs free energy. So energy, entropy and heat capacity का relationship यहाँ पे proof हो रहा है. So by change in temperature, the change in free energy and change in enthalpy can be calculated with the help of Nernst heat theorem. The above equation shows that the relationship between energy, entropy and heat capacity. So this is all about your question number 1, Nernst heat theorem. This is all about from my side. Thank you so much.